Have you ever wondered what happens to tan theta when theta becomes 90? Well, it doesn't die, but it becomes undefined. So today we are going to dig deep into this concept of tan theta becoming undefined at theta equal to 90. So 600 CE में भास्करा वन ने आर्यभट्टा के वर्क को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हुए टैन थीटा की कुछ वैल्यूज़ को और इजी तरीके से बहुत सिंप्लीफाइड श्लोकास में समझाया था. Before we proceed, I request you to subscribe the channel and like the video. So ये जो थीटा 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट है, ये टेम्पल आर्किटेक्चर में, एस्ट्रोनॉमी में, कैलेंडर मेकिंग में, नेविगेशन में बहुत यूज़ होता है. सो दैट इज़ हाउ ट्रिग्नोमेट्री कनेक्ट्स टू रियल लाइफ. नेविगेशन में मतलब जैसे प्लेन से जा रहे हैं या शिप से ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली इन जगहों पर बहुत यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट ट्राई एंड कॉम्प्रिहेंड कि अगर सन आपके बिल्कुल हेड के ऊपर है, जस्ट ऑन टॉप ऑफ योर हेड, तब आपकी शैडो ज़ीरो हो जाएगी, आपकी शैडो दिखेगी नहीं. सो दैट मीन्स वी आर एबल टू कैलकुलेट द नून टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो यहाँ पर ये रेड एंगल एक अक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री ऑलरेडी दिया है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, we are not talking about this 90, but we are talking about this particular angle becoming 90. So you can see कि जब है अल्फ़ाबेट B को हम मूव करते हैं तो ये जो ग्रीन लाइन है ये बिल्कुल छोटी होती जा रही है. दिस ग्रीन लाइन इज एडजेसेंट टू एंगल B. एडजेसेंट मीन्स एंगल B के साथ वाली साइड, एंड ऑपोजिट मीन्स एंगल B के सामने वाली साइड. एंड ब्लू लाइन इज द हाइपोटेनस विच इज opposite to 90 degree angle. So we can see as B is getting closer to A, this green adjacent is becoming shorter. The blue hypotenuse is getting closer to the pink opposite. ये blue line इसके पास आती जा रही है. So when it will become very very close, we can see that this green line is kind of getting minimized rapidly. So this angle is 71.86 now, 81.17, and adjacent has become 0.72. And likewise, this blue hypotenuse is also getting shortened. Not only is getting closer to pink line, but ये छोटा भी होता जा रहा है. So when this angle will exactly become equal to 90 degree, we can see that the adjacent has become 0 and the hypotenuse has बिकम इक्वल टू ऑपोजिट. मतलब ये जो ब्लू लाइन है हाइपोटेनस, ये तो रेड लाइन के साथ बिल्कुल कन्वर्ज हो जाएगी. सो एट सच अ स्टेज दिस ट्रायंगल हैज़ एक्चुअली रिड्यूस टू अ लाइन. नाउ ओवर हियर एडजेसेंट हैज़ बिकम ज़ीरो, बट हाइपोटेनस और ऑपोजिट को हमने एक्स लिखा है. वाई? बिकॉज राइट नाउ वी कैन सी ऑपोजिट एंड हाइपोटेनस एज 4.64, बट दे कैन बी एनी. They can be any values, but the point is they will be equal. Since these are variable values, इसलिए हमने इनको variable x से denote करा है. Now let us apply the definitions of the trigonometric ratios. So we know that sine is opposite upon hypotenuse. Since both of them are x over here, it is x upon x, which is 1. Cos 90 is adjacent upon hypotenuse, which is 0 upon x, hence giving us 0. However, tan 90 is opposite upon adjacent, which is x upon 0, और x upon 0 एक undefined term कहलाती है. Now, why is it called undefined? That is something I'm going to explain in another video. When you've subscribed the channel, you can look for that video as well. However, a number which is not 0, x एक ज़ीरो नहीं है, बिकॉज x की वैल्यू कुछ नॉन ज़ीरो यहाँ पर डिफाइंड है. सो जब एक नॉन ज़ीरो नंबर को हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू अनडिफाइंड होती है. अनडिफाइंड मतलब हमें पता ही नहीं है कि वो वैल्यू क्या है, वो बहुत बड़ी है, वो बहुत छोटी है. सो इसलिए हम उसको अनडिफाइंड बोलते हैं. नाउ x इज़ नॉट ज़ीरो बिकॉज अगर x ज़ीरो हो जाएगा तो ये
लाइन भी नहीं रहेगी, ये एक पॉइंट बन जाएगा. आई होप दिस हेल्प्ड यू, because these are some very important concepts which you should not memorize but understand that why certain things behave in a certain manner. So if sine, cos and tan at 90 finally makes sense to you, congratulations, you've officially upgraded your maths brain. Thank you.